सौन्दर्यलहरी श्लोकम् 88 पदं ते कीर्तीनां प्रपतमपतं देवि विपतां कदं नीतं षड्विगे कठिनकमटी गर्भरतुलां कदं बाबा गोप्यामुपयमनकाले पुरपिता यदा दायन्यस्तं तृषुतिदयमानेन मनसा न कैनागस्त्रीणां करकमलशङ्कोचचिभिः तरूणां देव्याणां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेऽप्यकिशलयकराग्रेण तततां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमग्नाय तततौ ततानि दीनेऽप्यगस्यमनि च माचानुशत्रुषीम् अमन्तं सौन्दर्यं प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन्मन्दारस्तबकशुभके यादुचरणे इमज्जन्मञ्जीवक करचरणषट्चरणताम् पतन्यासा क्रीडा परिचयं जिवारब्धु मनसक स्खलन्दस्ते केलं पवनकलहं शाण जगति अधस्तेषां शिक्षां शुभकमनिमञ्जीररणितग शलातोक्षक्षाणां चरणकमलं चारुचरिते कदास्ते मञ्जत्वं मृगनगरि रुद्रेश्वर पृथक शिवस्वच्छाया गडितकबड प्रच्छदपड त्वदीयानां भाषा प्रतिफलनराकारुणदया शरीरे शृङ्गारो रसयवतृषां दोक्ते कुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरेशाभाचित्ते दृशतु बलशोभा कुचतटे वृषं दण्वी मध्ये मृदुरसिजारोकविषये जगत्रातुं सम्भोजयति करुणा काचितरुणा कलङ्ककस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिर्कर्पूरै मरकतकरण्डं निपीडितम् अधस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमितं रिक्तकुकरं विधिर्भूयो भूयो निपीडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्दक पुरमशितदस्त्वच्चरणयो सभर्यामर्याधा तरलकरणानामशुलभा तदा एते नीता चदमकमुगा सिद्धिमधुला तव द्वारो भातस्थितिभिरणिमाद्यायपि यापिरमरा कलत्रं वैदात्रं गति गति भजन्ते न कवयक शियो देव्या को वा न पवति पति कैरभितनैः मगादेवं कित्वा दवशते शतीनामि चरमे कुचाभ्यामाशङ्गग कुरवकतरोरपि यशुलभग गिरामागोर्देवीं दृगिणकृगिणीमाकमभितो हरे पत्नी पद्मां हरसकचरीमधृतनयां तुरीया कापि त्वं दुरितकमनिष्ये मम महिमा मगामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातक